The Delhi government has intensified its fight against worsening air pollution in the national capital. New restrictions are now in force, tightening checks on vehicle emissions and fuel access. Fuel pumps across Delhi have stopped supplying fuel to vehicles without a valid Pollution Under Control or PUC certificate. The move is part of a stricter enforcement under the Graded Response Action Plan or GRAP, as air quality remains in the severe category in the national capital. Non-Delhi registered private vehicles that do not meet BS6 emission standards are also being denied entry into the city. The ban, however, does not apply to CNG or electric vehicles, public transport, or vehicles carrying essential goods and services. The no PUC no fuel rule is also being enforced using automatic number plate recognition cameras installed at petrol pumps. Over 580 police officers have been deployed at 126 checkpoints, including major border entry points into the city. Transport Department enforcement teams have also been stationed at fuel stations to ensure compliance. The Delhi government says it is also planning a complete overhaul of the PUC certificate system. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said the current system needs reform, and a new carpooling app is being developed to reduce the number of vehicles on the road. जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। Delhi Minister Parvez Sharma appealed to residents to cooperate with the measures, calling them essential to protect public health. दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, 6 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी। हर साल धीरे धीरे खत्म होगी, और दिल्ली की जनता के ऊपर में हम कोई भी हार्श रूल नहीं लगाना चाहते, कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहते। ये गाड़ी ना चले, वो ना चले, इसके लिए दिल्ली की जनता को हमारे साथ में सहयोग करना है। दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाए, वो उसका पालन करना है। However, petrol pump owners have raised concerns. The Delhi Petrol Dealers Association has backed the government's intent but flagged operational challenges. In a representation to Delhi's Environment Minister, the association said the existing emission checking infrastructure is outdated and lacks real-time integration with ANPR cameras. They also said earlier trial runs produced unreliable data. Petrol dealers have warned that enforcing the rules effectively will remain difficult unless these technical issues are addressed.